सो पावर बीआई के अंदर जब हम ओपन करते हैं तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि पावर बीआई का इंटरफेस क्या होता है, कैसे पावर बीआई वर्क करता है, कहाँ कहाँ क्या चीजें होती है। आई थिंक ये सब चीजें आपको पता हो गई हो। अब जो है आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि पावर बीआई को आगे कैसे, आगे क्या किया जाता है। सबसे पहले डेटा कनेक्ट करना हो। ओके, तो यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिखेगा डेटा कनेक्ट करने का ऑप्शन। लेकिन जब आप कनेक्टिंग डेटा पे जाएंगे तो यहाँ मोर ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे डेटा कनेक्ट करने के। अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। जैसे फाइल, किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, Just you want to connect the Excel file, you want to connect the CSV and text file, XML file, you can choose here. Same like the database, you can connect the database like SQL, Access, databases, SAP databases, you can connect it. Same like the Fabric, Microsoft Fabric, it means semantic model, data flow, warehouse, SQL database, like you can connect here. Online. Second is the Power Platform. So Power BI, data flow, common data services, Azure, you can connect from the Azure. Online services just like SharePoint, Microsoft Exchange, Google Analytics, Salesforce, you can connect it here. And some uncategorized data just like web, OData feed, ODVC, Google Sheet, you can connect it here. But we discuss one by one. So first we have select the file. In the file have a Excel workbook. So select your Excel workbook, connect here, and you can choose any Excel file, which file you want to connect it. Okay, just like the dashboard, dashboard is the data. Okay, so we have connect this data. This is the hospital data. Okay, that and here show the all sheets. जितने भी शीट्स आपके पास है वो सारे शीट्स ये शो करेंगे. You can select, जस्ट क्लिक हियर. आपको क्लिक करने पे उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा. बट मुझे प्रीव्यू नहीं चाहिए. प्रीव्यू ठीक है, मुझे डेटा चाहिए. तो यहाँ ट्रांसफॉर्म या लोड का दो ऑप्शन होते हैं, बट आपको यहाँ पे क्लिक करने पड़ेंगे, देन एक्टिवेट होगा. इफ नॉट क्लिकिंग द चेक बॉक्स, दिस इज नॉट एक्टिवेटेड, डिसेबल, देन नाउ इज एनेबल. There are two options, load and transform. Load, it means your data directly add in the your Power BI, and transform, it means data transform to Power Query. But when you use the transform, I see the data and realize some problem in the data. I want to change before the loading in the Power BI. So that time we have just click here transform. When you click the transform, we got the Power BI, the Power Query, and here we can change anything of the in the data. Okay, just like null. Okay, so we just go to the replace value, null to 0, and okay. See it? Every null convert in the 0. Replace null to 0. And then after that final, then click here, close and apply. Your data comes in the Power BI data set. Now question that where I can see my data. Just click here the table view. Here is the table view. When you click the table view, your data will be shown here. Right? But problem is that I have the multiple tables, multiple sheets in my Excel file, and I want to add the all data sheet in the Power BI at one time. That is possible? Yeah, of course possible. We have, I want to remove this data. So click here and delete from the data. So data will be removed. When you go to transform, in the transform also not a data. So completely data will be deleted from the Power BI.
Now click here Excel, and we go to the one location, P data. This is the P data. In this data, I have multiple sheets. First sheet is the customers. There is the customer requirement details. Second sheet is the PRG, it means product details. And second is the sales. Sales have a completely sales data, but in the sales have only information, product ID. It means product information. Only for product informations. Only for PID. Rest of the detail in the PRG sheet, same like customer information only for CID in the data sheet. Rest of information, so customer. So I need to insert both of product, sales, and customer, both of sheet. Now just click the load. My data is okay. No need to change anything. Just click the load. In the few seconds, your data will be loaded. And my data have a common field. So go to the data model. You can see my data already relate, all automatically created to relationships because the field name are same in the both of data. Just like PID here, also sales team, a PID here. So automatically will be create relationships. Also here, CID have a relationship. So what the benefit of the relationship? Just like I want to create one table. So click here. I want to product total product. So we just click here product name. So we got the total list of product. Now I want to total sales of the product. But problem is that in the product column not have any quantity details. Quantity details in the sales column, sales sheets. So we just click the quantity put here. So here so you can see here product by total quantity show here. So this is the benefit of relationships. So automatically relationship will be check the beer PID in the product sheet and take the beer PID 1, go to the sales data and filter the one product ID and sum the all quantity and show here automatically. This is the relationship. So automatically relationship create because all sheet have a same field. This is not a necessary. Every sheet name, every data have a sheet names, a column name same, then create the relations. This is not necessary. But when your sheet name, field name is different in your data sheet, that time you have created the manual relationship. How can create? Just simple. Put your field, which field will to relate to sheets, just here drop and just save it. Again repeat, just like CID and this CID. So I want to relate with sales team and customer team. Just click here, the CID. My relationship will be created. So this is not necessary that every sheet have a relationship. Okay, but when you create the multiple when you add the multiple data set, the system automatically check the relationship. If both of the table have a common data field, then relationship will be created if required. If not required, you have delete the relationship. Okay, Joseph, any doubts? Remove the relationship, sir. In the future classes, I discuss the detail in the relationship. Okay, now just know if you want to apply just like VLOOKUP between two sheets, that time use relationships. Okay, in the Excel, you know VLOOKUP, Yeah, yeah. just like same. So I want to complete just like this is the PID number 11, but product name not available in this same. Okay, so
I don't want to add new column for the product name because I have also the product sheet. There is available the product name with product ID. So with relationship, I have put the 11 number PID to name from the product sheets. Okay, now clear? नो सर, हिंदी थोड़ा मेरे को मुश्किल है. नहीं नहीं नहीं. You know the VLOOKUP in the Excel. या एक्सेल है मेरे. Okay. So just आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सर मेरे पास एक एक्सेल फाइल है. मेरे पास एक डेटा है. जस्ट यू कैन सी हियर आई हैव द डेटा, द सेल्स डेटा. ओके, इन दिस सेल्स हैव ए कंप्लीट डेटा. दिस इज द प्रोडक्ट आई. So without relationship, I just create the one table here. This is the PID and also the quantity. Which PID number, how many quantity will sell. Okay, the PID it means product ID. But my requirement is also the product name here. So one and product is the beer, so is the beer here. Product is the chai, so the tea, so the tea here. Got the problem? Okay. But problem is that in the my data sheet not have a product name. Not have a product name. But I have the one file, one data sheet which have the product name and product ID also. So the product sheet का जो product name है, we can look up in the sales data. समझ में आया आपको? So उसके लिए हम रिलेशनशिप करेंगे. हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों शीट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे. रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना है. जस्ट सिलेक्ट द फील्ड which field to relate with the product sheet and just drop on the same thing. Okay, you can say PID and say. Now अब रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि प्रोडक्ट टीम में गया और प्रोडक्ट नेम को मैंने PID के जस्ट बगल में रख दिया. नाउ यू कैन सी 1.beer.250. नाउ अंडरस्टैंड कि क्या करता रिलेशनशिप. जब आपके पास डेटा आपको दो डिफरेंट डेटा शीट या डेटा फाइल में मिलेगी, तो आपको या तो पहले डेटा को कंबाइन करना होगा एक्सेल शीट में, देन लोड इन द पावर बीआई. अदरवाइज यू कैन मेक द रिलेशनशिप. ओके, समझे? सो अगर मुझे रिलेशनशिप नहीं करना है तो मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करके सारे के सारे प्रोडक्ट नेम मुझे लाने पड़ेंगे. इसके लिए मैं एक्सेल का VLOOKUP यूज कर लूंगा. But if you change your data, have a problem because sometimes data not from the Excel, data from the different sources. Like one data come from the SQL server, another data come from the some websites. So that time VLOOKUP लगाना possible नहीं ना है. अभी ये दोनों फाइल एक्सेल शीट से आया हुआ है, then can be use the VLOOKUP. बट मान लीजिए एक एक्सेल से आया हुआ है, दूसरा MS एक्सेल से आया हुआ है, या SQL सर्वर से आया हुआ है. सो दैट टाइम प्रॉब्लम ना, उस समय रिलेशनशिप. मैं अगेन बताता हूं कि मान लीजिए कि मुझे कस्टमर वाइज टोटल चाहिए. क्या चाहिए? कस्टमर वाइज टोटल. विच कस्टमर हाउ मनी टेक द क्वांटिटी. सो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो CID इट मींस कस्टमर ID. सो कस्टमर ID को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया. अकाउंट ID आया, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, तो मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैंने कर दिया यहाँ पे नो कैलकुलेशन डॉट समराइज है. ओके, समटाइम जब किसी नंबर फील्ड को आप रखेंगे तो आपका कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, डॉट समराइज. And now I want to put here total sold quantity. So we have put the quantity here. यहाँ पे टोटल आ.
अब प्रॉब्लम है कि हमारा जो पर्सन है वो किसी की आईडी से नहीं जानता है, वो नेम से जानता है, सर। हाँ सो नेम से कैसे आएगा? मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम चाहिए, वी वांट टू शो योर कस्टमर नेम। एंड कस्टमर नेम कहाँ पर है हमारे पास? कस्टमर नेम हमारे इसमें आप आइएगा, ए में है, कस्टमर शीट में। ओ आई थिंक कस्टमर शीट आई हैव डिलीटेड, या कस्टमर शीट को मैंने डिलीट कर दिया। सो कस्टमर शीट हैव अनदर data file. So we have connect the data again, the data, and now I want to just one customer. Okay, click the customer and just look. And go to the here. So automatically, because both name have in same fields, CID and CID, तो automatically इसने connect कर दिया. बट अगर मुझे ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं करना है, जस्ट पुट द CID ऑन दिस CID एंड जस्ट सेव। अब जो है मैं अपने डैशबोर्ड में आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और क्या करूंगा, तो कस्टमर शीट है, यहाँ से कस्टमर नेम को यहाँ पे पुट कर, कस्टमर नेम ऑल्सो सिटी, यू वांट टू शो द सिटी, यहाँ हम सिटी भी शो कर। ओके, so customer number 1 name connect from the customer sheet, different sheet. तो CID and quantity आपकी sales वाली sheet में है, and name and quantity from the customer sheet. Now clear? तो relationship का benefit समझ में आया? Okay. Understand, sir? Yes, sir. Hello? Any problem? Yes, sir. No problem. We will work So on hospital data, sir. Actually, it is good for us actually. ओके, लेकिन हॉस्पिटल डेटा के अंदर रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं था, तो कैसे करते? अगर हम रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डेटा होनी चाहिए ना सर। Okay. So I just share the data Excel file to you and also the class recording.